Hi everyone. In this video and in the due course of next few videos, we'll try to learn what is technical analysis, how we can use technical analysis in your trading and how we are using it in our trading, so that after the end of these series of videos, you will be able to understand how we can use technical analysis for its actual purpose. The actual purpose of technical analysis is forecasting price for the future based on the past performance or the past charts which we have been seeing, or the past data which we have been reading, or the past behavior of the price of that particular financial asset. Now this financial asset can be anything. It can be an index like Nifty, it can be a stock like XYZ, but the price behavior what has happened in past most likely is going to replicate in future. This is what technical analysis says. If you go by the definition, technical analysis is basically forecasting prices of a particular asset class based on the prices that has occurred in past or the past data of that particular asset class. Now, how technical analysis is different from fundamental analysis? Fundamental analysis works on things like what is the company doing, what is the economic parameter of the country at that particular point, how is the country progressing, what is the demand in that particular sector progressing, and how is the financial use, or how is the better fund management and cash management of the company that eventually will lead to the growth of that particular stock. Whereas in technical analysis, what we see is, we believe that whatever is the price of the stock or a particular asset, financial asset, or a particular stock, say we have a stock called XYZ. Now, अगर ये stock अच्छा कर रहा है both in terms of business, तो वो ना उसके प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट होगा. सो वो आपके फाइनेंशियल नंबर्स में तो दिखेगा कि यस ये कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन ये XYZ कंपनी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, अगर ये अपना बिजनेस अच्छा ग्रो कर रही है तो वो उसके प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा. से इसी कंपनी की अगेंस्ट कोई नेगेटिव न्यूज आ गया, उसका फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस का जब एनालिसिस होगा तो वो उसका इम्पैक्ट हो सकता है 3 मंथ डाउन द लाइन, 6 मंथ डाउन द लाइन हमको पता चले. बट टेक्निकल एनालिसिस वही सेम चीज को इंस्टेंटली बताएगा. प्राइस में आपको दिखेगा उसका रिफ्लेक्शन कि ये नेगेटिव न्यूज आया था, इसका नेगेटिव न्यूज का ये इम्पैक्ट आएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में या इस पर्टिकुलर पीरियड में. से फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए कोई नेगेटिव न्यूज चल रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर या उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, आपको दिखेगा कि वो नेगेटिव प्राइस बिहेवियर भी रिफ्लेक्ट करेगा. ये होता है टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस आपको इमीडिएट रिजल्ट बेस्ड ऑन whatever is happening around that stock दिखाता है, compared to fundamental analysis which is more suitable for a analysis of a longer term duration, because मोस्टली कंपनीज क्या होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करेंगी, तो आप उस समय उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकोगे. या फिर से गवर्नमेंट रिलेटेड कोई न्यूज आ गया उस पर्टिकुलर डोमेन में उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसका फिर उस समय आपको इम्पैक्ट समझ में आएगा. तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस का अंडरलाइंग डिफरेंस, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस इज गुड फॉर a decision which we will take in the long run, whereas technical analysis it is used mainly for a purpose of a short term duration. अब अगर हम बात करें कि what are the key components of technical analysis, and we will learn all these components in detail in the next few chapters. But अगर हम सिंपल सा बात करें कि components क्या क्या हैं, तो देखिए पहला चीज तो ये हो गया कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए मेजॉरिटी लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं. नाउ टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर्स में वो जो इंडिकेटर्स क्रिएट होते हैं वो 3 चीजों का फैक्टर मेनली लेते हैं, प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट. इससे क्या होता है कि वो टेक्निकल इंडिकेटर फ्यूचर के प्राइसेस को बताने में आपको या फ्यूचर के डायरेक्शन को बताने में आपको हेल्प करता है. ओके, एंड ये बेसिकली क्या होता है, जितने भी ये इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, ये आपको एक मोमेंटम का सिग्नल देते हैं या फिर रिवर्सल्स का सिग्नल देते हैं कि प्राइस बिहेवियर और मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या हो सकता है कि रिवर्स कर जाएगा. तो ये आपको इंडिकेटर्स से मिलता है. तो टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स का भी रोल काफी बड़ा है. देन वी हैव वॉल्यूम एनालिसिस. जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक बहुत अच्छा कोई न्यूज आ गया, नाउ मेनी मोर पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक. नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग that there is a good news about the stock and many people are interested in the stock may not reflect in the fundamental analysis at this point of time. यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस में हो सकता है वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद उसका इफेक्ट दिखेगा, बट पीपल आर इंटरेस्टेड टुडे.
So if there is a spurt in volume in a particular stock, there should be some reason for it, right? तो टेक्निकल एनालिसिस में ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है. तो टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स का रोल बहुत बड़ा है, वॉल्यूम का रोल बहुत बड़ा है. देन वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक. स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक और रिलेटिव स्ट्रेंथ, इट मीन्स दैट अगर हम बात करें कि स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है, बट वो कितने मोमेंटम का है. इफ मोमेंटम इज हाई, it is more likely the price trend will continue for a longer duration. If momentum is low, price trends may reduce or slow down in very short term or very short duration. ठीक है. Then we have chart pattern analysis, यानी कि combination of chart क्या बन रहे हैं, यानी कि मान लो एक रेड कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, which we will cover in the next chapter. तो ये सब जो बन रहा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है. Then cumulatively what it is going to predict you, तो वो हमको दिखेगा. फिर उसके बाद क्या है, कैंडल्स कैसे बन रहे हैं. मतलब इफ देयर इज एक्चुअल वेरी मच इंटरेस्ट, यू विल सी कैंडल्स बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे. द मोमेंट वी सी कैंडल्स बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, then candle analysis is also broken into two parts. One is support, one is resistance, the other one is trend analysis. So support and resistance candles के basis पे हमको समझ में आएगा कि okay what it is trying to create. We'll learn that in a due course. And when we talk about trend analysis, so say we'll learn this also, but there are certain patterns in a candle which will reflect you, okay, there's this positive momentum in the market, or we usually call it in our market terms bullish momentum in the stock. Or if there is a negative news, then a particular candle will appear which will reflect you a negative momentum in particular stock or commodity. That will basically indicate you that the trend can be negative based on this particular candle. So these are basic components of technical analysis. Next chapters will focus on explaining you all these things in detail in a particular systematic way. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.